Good morning, students. Today we are going to start the revision of chapter number 2, Nutrition in Animals. Now, firstly we start the definition. रिवीजन में आपको जो भी मैं डेली रिवीजन करवाती हूँ उसको आपको लर्न करना है. फिर आपको अपनी मदर या अपनी किसी को भी सुना देना है. उसके बाद जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है वही वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं. सारे चैप्टर्स नहीं लिख सकते, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, इसलिए उसको रीड करना है और फिर अपनी मदर को सुना के फिर जो डिफ़िकल्ट लगता है वही आपको लिखना है नोटबुक में. क्लियर? फर्स्टली start the definition. First definition is food. The substances that supply nutrients to the body. The substances that supply nutrients to the body are called food. Okay. Next, digestion. A process of the breakdown of complex component. A process of the breakdown of complex component of the food into simpler substances is called digestion. A process of the breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. Next, third, nutrition. A process of intaking of food and its utilization in body is called nutrition. A process of intaking of food एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी, टेक करना और यूटिलाइज कर देना बॉडी में इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन. फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट, water from the undigested food is absorbed mainly in the large intestine. Water from the undigested food is absorbed mainly in the large intestine. Next, which of the following is the mode of feeding in python? Python का क्या mode है? Swallowing. Which of the following is mode of feeding in python? Swallowing. Next, fourth, digestion of which component of food begins in buccal cavity? Digestion of which component of food begins in buccal cavity? Starch. किसका होता है? Starch का. Now next, which taste can be detected by the tip of the tongue? Which taste can be detected by the tip of the tongue? Sweet. कौन सा taste? Sweet. Now, which of the following is a complex component of food? Which of the following is a complex component of food? Starch. Starch is a complex component of food. Now next, in which organ the digestion of carbohydrates, fats and protein is complete? In which organ? Small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. फिर वेयर आर द विली लोकेटेड? विली लोकेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. इन विच ऑर्गन आर डाइजेस्टिव जूसेस नॉट प्रोड्यूस्ड? इन लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस नॉट प्रोड्यूसेस. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज? सेल्यूलोज कौन डाइजेस्ट कर सकता है? काऊ. Which of the following animal can digest cellulose? Cow. Now, next, filling the blanks. The main steps of nutrition in humans are कौन से हैं? Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay. Now next, largest gland in the human body is? कौन सा largest gland in the human body is? Liver. The largest gland in the human body is liver. कौन सा है? Liver. Next, the stomach releases hydrochloric acid and juices which act on food dash. The stomach releases hydrochloric acid and juices
Which act on food? Digestive. Which act on food? Digestive. Next, the inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowth called dash. The inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths. उसको क्या बोलते हैं? विली. क्या बोलते हैं? विली. Next, amoeba digest its food in the food vacuole. Amoeba digests its food in the food vacuole. Okay. Now, true or false? First true or false is digestion of starch starts in the stomach. Digestion of starch starts in the stomach. False. The tongue helps in mixing food with saliva. It's a true. The gallbladder temporarily stores bile. It's a true. The ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for the some time. जैसे cow है. The ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. It's a true. Next, one sentence answer. First is mention the types of teeth according to their functions. Types of teeth बताने हैं. Firstly है 3 तरह के होते हैं, इंसेजर्स, कैनाइन एंड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इंसेजर्स में कौन से हैं? ये कटिंग एंड बाइटिंग टीथ बोलते हैं. इंसेजर्स कौन से हैं? कटिंग एंड बाइटिंग टीथ. और कैनाइन है पियर्सिंग एंड टेयरिंग टीथ. ठीक है, इंसेजर्स कटिंग एंड बाइटिंग है, कैनाइन है पियर्सिंग एंड टेयरिंग है. प्रीमोलर्स एंड पॉलर्स क्या करते हैं? चोइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ. चोइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ. फिर से रिपीट कर रही हूँ. इंसीजर्स कटिंग एंड बाइटिंग है, कैनाइन पियर्सिंग एंड टेयरिंग है, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स चूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ. ओके. नाउ मेंशन द नंबर ऑफ मिल्की टीथ एंड परमानेंट टीथ इन ह्यूमन बीइंग. इन ह्यूमन बीइंग number of milky teeth are 20. Number of milky teeth are 20 and number of permanent teeth are 32. Human being number of milky teeth are 20 and number of permanent teeth are 32. Next, what is the function of bile? What is the function of bile? Bile क्या करता है? डाइजेशन करता है किसका? फैट का. ठीक है, ये कहाँ पे मीडियम है? अल्केलाइन मीडियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन. बाइल प्रोवाइड अल्केलाइन मीडियम in small intestine. Bile provide alkaline medium in small intestine and helps in the digestion of fats. Helps in the digestion of fats. Okay. Next, what are absorbed from the undigested food material in large intestine? What are absorbed from the undigested food material in large intestine? Water and some salts are absorbed from the undigested food material in large intestine. Water and some salts are absorbed from the undigested food material in the large intestine. Okay. State the location of liver. Liver is situated in the upper part of the abdomen on the right side of the stomach. Liver is situated in the upper part of the abdomen on the right side of the stomach. Upper part of the abdomen on the right side of the stomach. Okay. Next, what is cellulose? Cellulose is a complex form of carbohydrate. Cellulose is a complex form of carbohydrate. Next, what is the function of pseudopodia in amoeba? What is the function of pseudopodia in amoeba? Pseudopodia in amoeba capture the food and help in movement. Pseudopodia in amoeba
capture the food and help in movement. Okay, where is the bile produced and which component of the food does it help to digest? Bile is produced in the liver, right? Bile helps to digest food composer component of the food. Bile कहाँ पे? लिवर में प्रोड्यूस होता है. हेल्प टू डाइजेस्ट फूड कंपोजर कंपोनेंट ऑफ द फूड. फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट 3-4 सेंटेंस हैं. फर्स्ट 3-4 सेंटेंस है, व्हाट आर विली एंड व्हाट इज दैट लोकेशन एंड फंक्शन. द इनर वॉल ऑफ द small intestine have 1,000 finger-like outgrowth called villi. The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. Thousands of finger-like outgrowth called villi. Okay. Location में क्या आएगा? They are found in the inner wall of the small intestine. They are found in the inner wall of small intestine. And function क्या है? Villi increases the surface of absorption of digested food. So absorption of digested food material easily occurred in small intestine. क्या फंक्शन है? इंक्रीज, सरफेस को इंक्रीज करती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ digested food. So absorption of digested food material easily occurred in small intestine. Okay. स्मॉल इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और जो भी उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करती है. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. अब हम इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज से क्यों लेते हैं? ग्लूकोज द simplest form of carbohydrates. Glucose is the simplest form of carbohydrates. It can directly absorbed in the blood. It can directly absorbed in blood. Through blood circulation, it can reach to body cells. Through blood circulation, it can reach to body cells. Okay. In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. Glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. So we get instant energy from glucose. Okay. Glucose simplest form है carbohydrate की. It can directly absorbed in the blood. Through blood circulation, it can reach to the body cells. In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. So we get instant energy from a glucose. Okay. Mention the digestive organs of human. सबसे पहले कौन सा है? बक्कल कैविटी है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस है. ओके, बक्कल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस. ये क्या है? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं ह्यूमन में. ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ द टंग. फंक्शन टंग के कौन कौन से फंक्शन हैं? It detects different tastes of a food. It detects different tastes of a food. It is helpful in talking, and it mix saliva with the food during chewing and help in swallowing food. Different tastes को डिटेक्ट करता है, टॉक करने में हेल्प करता है, and it mixes saliva with the food during chewing and help in swallowing food. Okay. Next, explain the structure of a stomach. Stomach is a thick walled bag. Its shape is like a flattened U, and it is the widest part of the
alimentary canal. Okay, stomach is a thick walled bag. Its shape is like a flattened U, and it is the widest part of the alimentary canal, and it is connected with the esophagus at upper end and with small intestine and lower end. It is connected with the esophagus at upper end and with small intestine at lower end. Okay, फिर the inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. Inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. Churning of food and partial digestion of protein occur in the stomach. Churning of food and partial digestion of protein occur in the stomach. ओके, तो ये था मेरा 3 4 सेंटेंस आंसर, यहाँ पे फिनिश्ड हो गए हैं. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे. आज के लिए तुम्हें इतना ही रिवाइज करना है. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.